Namaskar dosto. Good evening and once again welcome to Fertility Dost platform. We are your Dost in true form because we discuss your pointers, your issues, your concerns with India's top mood fertility specialist. And today we have none other than Dr. Talwar with us. I think Delhi NCR ही क्यों इंडिया के सब लोग जानते होंगे डॉक्टर तलवार के बारे में. So, people, today we are going to discuss about AMH values, thyroid values, and vitamin D. So, आप सोच रहे होंगे कि हमने इन सबको इकट्ठा क्यों कर दिया. कहीं ना कहीं इन सब का इम्पैक्ट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है. And we tend to talk about more, rather we more talk about AMH values because I think this is the starting point. अगर कोई भी fertility center में enter करता है तो first thing is doctor, do I need to check my AMH value? Doctor, what about my AMH values? They are so low or they are so high. So we are much concerned about AMH value, but कहीं ना कहीं हम अपने थायराइड को और अपने विटामिन D3 के लेवल्स को छोड़ देते हैं. And that too, we usually tend to discuss these hormones related to females. So today we thought, why not take this particular topic with along with the wholesome package of couple, that is males and females. जी हाँ, मेल्स के साथ भी हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि फीमेल्स के साथ ही होना जरूरी है. Males can also deal with these issues. So, what to do, how to do, and is it really necessary to go for hormonal test? अगर मैं एक मेल हूं तो मुझे अपने हार्मोन टेस्ट कराने जरूरी है कि नहीं? ये एक मिथ है या यूं कहिए हम शायद इसको जानते नहीं हैं प्रॉपरली. सो देन वी थॉट कि लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंड जब हमने इन सब टॉपिक के बारे में सोचा तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बहुत सीनियर डॉक्टर को आपके सामने लाते हैं, द सीनियर मोस्ट डॉक्टर फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ क्लिनिक्स. एंड सो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे तीन मेन टॉपिक्स: AMH, thyroid, vitamin D3 with none other than Dr. Talwar. So let me call him on the main screen and we'll just start with the session. Namaskar, doctor. Welcome to Fertility. Namaskar, Purnima ji. Thank you so much for inviting me here. And at the very onset, greetings from Birla Fertility and IVF. And I'm so happy to be back. So happy to be with Fertility Dost and with all of you. Thank you very much. So, viewers, today we have Dr. Talwar with us, Dr. Colonel Professor Pankaj Talwar, VSM. And I think Delhi NCR people तो बस डॉक्टर तलवार का नाम आते ही पहचान लेते हैं. He is Director, Birla Fertility and IVF. And with Sir, we will discuss about the hormonal thing, AMH, and obviously the very known or very close to heart topic, thyroid, and then again vitamin D3. So, Dr. Talwar, when we talk about these hormones, we usually pinpoint these hormones in relation with females. हम मेल्स को यूजली भूल जाते हैं या उनको नहीं बोलते कि प्लीज गो एंड चेक योर हार्मोन्स. फीमेल्स पे ही हम फोकस करते हैं. सो AMH वी नो दैट it's a female related hormone. So what about other two hormones? Do we really need to concerned about these hormones in males also? Fantastic, Purnima ji. Thank you so much. मेरा कहना ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी. We normally ask people which kills more human beings, mosquitoes or elephant. तो जवाब आता है कि mosquitoes. Elephants, they don't kill us. Same thing is happening in now IVF and infertility or IUI, where we are focusing on big things. We focus on endometriosis, dermoids, fibroids, and we tend to miss, but they are the elephants that anybody can manage. But as a tertiary referral center at Birla Fertility and IVF, which has got more than 10 units working and 10 are coming in the coming 2 months, pan India, and we are expanding abroad also. When we look at our patient clientele and all over the world guidelines, which what they say is that small things like thyroid or low values of AMH or vitamin D, they are the main culprits of not having a child. So you picked up a very nice topic for today, and thank you for that. Now you have to know that both thyroid and vitamin D, they are part of our metabolic process.
Thyroid is one hormone which comes from our gland, which is present here. That's called a thyroid gland. And when thyroid becomes bigger, we have a swelling coming in our neck area. That's called Right. thyroid gland. The thyroid is being controlled by some hormone which comes from our glands in the head. They're called pituitary gland and hypothalamus glands. So when this gland thyroid is not working properly, the hormone comes from our brain and works upon the thyroid and tries to make it work. So as a result, the hormone called TSH goes more. So hypothyroidism we are diagnosing by an hormone called TSH, that is called thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulate करने के लिए जो हार्मोन है उसे कहते हैं thyroid stimulating hormone. Same thing with vitamin D. Vitamin D we take from the diet, we make in the body from our skin, and some amount of the vitamin D can also be made in the body itself. So both the glands they help us in the metabolism and also maintaining our youth and vitality. हमारे चेहरे का glow and everything depends quite a lot upon thyroid and vitamin D gland. Coming to in the men, and again you picked up a very very sensitive point. Men, when you look at the world literature, we find, and it's a daily practice also, we find that now men are responsible for around 60% of cases of infertility. 60% cases में male may be the reason, and if you look at some countries, it may be 70% or more. Okay. So what happens, Purima ji, is that when the thyroid values they go high, TSH goes high, and the thyroid gland is not working well, men के अंदर what all things can occur? The most important thing is the whole metabolic profile. इसके body में जो hormones काम करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं. Such a men can have low sperm count. They can have low sperm count. उनका उनका जो वीर्य का जो quantity है that can become less. They can have स्तंभन दोष, we normally call as erectile dysfunction. They can Right. have शीघ्र पतन, which we call as premature ejaculation. They can have, along with that, they can have defects in the sperm shape. जो शुक्राणु की बनावट होती है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं. सो बॉडी के पूरे पैरामीटर्स, तो पूरा सेक्सुअलिटी इज बैडली अफेक्टेड इन ए मेल हु हैज गॉट ए थायराइड डिसफंक्शन. मीनिंग अगर थायराइड का वैल्यूज एबनॉर्मल हो जाता है बॉडी के अंदर, उसे हम ट्रीट नहीं करते हैं, ही कैन हैव लो स्पर्म काउंट, लो वॉल्यूम, ही कैन हैव प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ही कैन हैव इरेक्टाइल dysfunction. And along with that, the biggest problem is that he'll have morphology problems. Sperms की बनावटी problems आ जाती हैं, and such men are known to have poor fertility outcomes. That's about the men, which I want to speak to you. Coming to the vitamin D. Vitamin D हमारी body का engine है. Whatever happens in our body, that's happening with the calcium metabolism. तो हमारी body में जो main engine है ना, carburetor, that is being run by vitamin D and calcium. In case any man who has got vitamin D deficiency, vitamin D deficiency को हम बोलते हैं जब किसी के अंदर बॉडी में 30 नैनोग्राम से कम विटामिन डी के वैल्यूज आते हैं. Such a man, in case we get such a man, he is known to have poor spermatogenesis. Sperm quality खराब हो जाती है उसकी. He'll have less vitality. The arousal and orgasm in the man goes bad. Along with that, it can also affect the morphology of these sperms. So in short, in case you look at our experience at Birla Fertility and IVF, and the worldwide, in case you look at the HTA guidelines and American guidelines, which are very clear, कि जो छोटे छोटे मच्छर है ना, तो ये mosquitoes like thyroid and Hmm. vitamin, they can actually destroy a man, destroy his fertility. So I think very rightly brought out, the men, they are two very avoidable causes of infertility. Thank you, Okay. Purima. So I think, doctor, we usually seriously, this is a new information for me also, and obviously our viewers must be enjoying the session. These are small facts, but obviously these are very important facts. So doctor, when patient visit you, or I can say that when couple visit your center and consultation was going on, what you suggest? Do you directly suggest these hormonal tests for couple, or you just wait about few days or months to see the results of other medicines and all that?
Yeah, very. So we're talking about the men now, no? We're talking about the men basically, not the Right. female part. So देखिए इसमें ना the way we look at it is that जब भी हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, so we have to reduce not only the illness but also the financial load upon the couple. The treatment of vitamin D, ना vitamin D का जो testing है ना, that will cost you around rupees 1500 per test. And Okay. now we are somehow hell bent upon reducing the pricing of the workup so that more people can take benefit of the treatment. Right. So what we do is any men coming to us, any couple coming to us, and we know that around 70% of the men, 70% of the men and the women, nearly, it's an average, are having vitamin Mhm. D deficiency. So how do we treat it? अगर उनका हम ब्लड टेस्ट करते हैं दे पे रुपीज 1500 Hmm. 1500 फॉर दी वाइफ ऑल्सो तो Or 3000 रुपया लग गया इनका so that's a huge amount. Either we do the testings and then we treat them. So what we normally do is that they are having some amount of deficiency we assume and we are giving them 60,000 units के tablets आते हैं powders आते हैं we give them every week for 8 weeks. This is okay. enough to make up their deficiency. And after we have Mhm. done with that, we give them one sachet or a tablet or a capsule every month. So that will look after the vitamin D. It's a very cheap treatment, barely costs rupees 200-300 for the couple. So we are very happy in doing such type of treatment. And we don't go in for testing in all the patients. That is to just reduce the economic burden on the couple. For Right. thyroid, And yes. For the thyroid, yes. Thyroid we carry out for all the men whenever Mhm. indicated. In case if we get a normal men, so देखिए we have to move away from the routine workup of a couple where a man comes and man is being looked as if when you give him a bottle of the semen sample, look at his semen and we treat him. No longer we're working like that. We have to Mhm. ask a man about his sexual history. So any man and with the wife, there's a big change which has come in our working. You get to look at it, 7 to 8 out of 10 men are having difficulty in erections and ejaculations. So for the audience who are here, they may be mixed audience. You have to know that they are called Stamban, Dosh, and Shigrapati. 7 to 8 Right. out of 10 men probably may have some element, and around 5 or 6 may suffer badly. So they have to be treated well, and there are multiple reasons of that. जैसे किसी का Right. हार्ट चेक करते हैं आजकल हम पेनिस और उसकी आर्टरीज को चेक करते हैं रूटीन थिंग विच कम अप इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड. So any men who's having any problems of that nature, we do ask for thyroid testing. And Okay. in case any man has got poor semen morphology, या sperm की क्वालिटी बहुत खराब है या Hmm. टेस्टिकुलर वॉल्यूम कम है हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर तब हम थायराइड करते हैं बट वी डोंट डू इट रूटीनली फॉर एवरी मैन. Okay. And doctor, male का तो we can correlate with the semen sample or semen report, semen analysis and all that. But अगर as a female, females कुछ symptoms show करते हैं for deficiency of these two, और उनके भी कुछ tests से you can correlate. Yeah, so it's again a very beautiful question which you brought out. So for the audience, all the audience present here, a small message will be that a woman is different from the men. अगर हमें कट ऑफ लेते हैं थायराइड का, I'll just give you a ballpark figure. We take a cutoff of say of around 4.5 or 5 of thyroid values. Mm-hmm. थायराइड के वैल्यूज क्या होता है टीएसएच का वैल्यू क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच. हाँ. अगर किसी भी स्त्री में थायराइड के वैल्यूज आते हैं 4.5 एंड Hmm. शी इज ट्राइंग टू बिकम प्रेग्नेंट or she is pregnant, it becomes a problematic thing. For the men, it is normal. So, for any girl who's trying to become pregnant, and we find that her levels of thyroid are less than 2.5 MIUs, she is okay. Between 2 and 4, our antennas they go up. कुछ तो गड़बड़ ये है. तभी है जब वो माँ बनना चाहती है when she wants to become a mother or she is in the process of bearing a child. अगर वो डिलीवरी कर लेती है डिलीवरी Hmm. करने के बाद values can be ignored. They can again become 4 to 5 can be normal in her. But इसे Okay. कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म. So हमने ये पाया है by doing a lot of studies that any woman who has got more than 2.5 units of thyroid hormone Hmm. TSH, they should be treated.
मोर देन 4 शुड बी डेफिनेटली ट्रीटेड. इसके साथ में कुछ और टेस्ट होते हैं, एंटी टीपीओ बॉडीज, थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज. बट सिंपली टू अंडरस्टैंड, वी डू, any woman who is coming to us, she is trying to become a mother. She's not a mother. She's subfertile or infertile. And one of the commonest causes for them is high levels of TSH. So every woman who comes to us, she undergoes TSH testing. That's mandatory for her. And it is a big issue in the women, as I've told you, in case मुझे दो mosquitoes पकड़ने हैं, मच्छर पकड़ने हैं, which can lead to infertility, they are thyroid and vitamin D. And not big diagnoses which doctors give nowadays, 3D scan, color Doppler. We have seen patients going to multiple doctors, multiple places, and big laparoscopies and 3D color Dopplers have been done, but thyroid is 5 or vitamin D is 15. Nothing can, but these have been missed because we are always looking for elephants. So I think look for the mosquitoes. And as rightly brought out, they are fully treatable. Few tablets within 1 month or 1.5 months, you do the IVF for that patient or an IUI for that patient, or they can conceive on their own. It's so beautiful, Purnima. In case you give the men who's come to you when the couple is not able to have cohabitus, so आपस में relation नहीं रख पा रहे हैं, give them vitamin D for 8 to 9 weeks, and the men get back his vitality. The whole life changes, and they become pregnant by their own. So I Right. think it's a very important thing for the men only when indicated, and for the women, every woman we should do TSH testing, and when she becomes pregnant also we should do her TSH testing. In case the values are on the higher side, we have to maintain them at 2.5. हम इसको 2.5 पे रखना है वैल्यूज को, तो वी हैव टू कीप टाइट्रेटिंग द डोसेजेस टिल द टाइम इट बिकम्स 2.5. और जो गोली खाते हैं थायराइड की, आप सबको बताना चाहूंगा कि कभी भी नहीं खा सकते हैं. दे आर नॉट लाइक हैविंग टी एंड कॉफी. दिस इज ओनली प्रॉब्ली few tablets in the world which have to be taken in the morning खाली पेट. सुबह उठते ही एक घुट पानी के साथ गोली खाना है आपने. यहाँ सब लोग गलती करते हैं, वो गोली खा लेते हैं चाय पीने के बाद में, खाना खाने के बाद में. यहाँ कहते हैं ब्रश भी नहीं करना. सुबह उठिए, एक छोटा सा गोली मुंह के नीचे रखिए और एक घुट पानी. दिस इज द वे टू ट्रीट, Mhm. टेक thyroid treatment. Thank you so much. Treatment. Right. Doctor, thyroid medication, we are just talking about this. So, I'll just take one query over here. Is there a thyroid issue that cannot be identified in blood? नहीं, थायराइड कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द ब्लड. थायराइड देखिए, थायराइड ना एक ज़माना था जब हम कुछ साल पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे, अभी भी पढ़ाई करते हैं, पर जब पेशेंट्स आते थे तो यहाँ लंप होता था उनके. सो लंप Acha, कि right. क्या केस है, थायराइड है. बट नाउ Mhm. डेज we are not going to that stage at all. Such people don't come to probably tier A and tier B cities. Probably in small villages, it's still happening. हमारे पास जो केस आते हैं, they are called, so when we have a thyroid here, lump present here, we call it thyroidism, hypothyroidism or hyperthyroidism. वो lump के साथ में आता है. And this is seen from far away. पूर्णिमा जी, हम जो बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड उसको नॉर्मल दिखता है, क्लिनिकली नहीं पता चलेगा हमें देखकर. क्लिनिकली जब यहाँ पे स्वेलिंग होगी तो उसको थायराइड दिखेगा दूर से, उसको ऑपरेट Mhm. करेंगे, दवाई देंगे. बट हमारा थायराइड हम जल्दी पकड़ते हैं आजकल. वी आर सी नो वी आर इवॉल्विंग ग्रेजुअली इन द साइंस. सो वी कैच सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि बिफोर इट बिकम्स क्लिनिकल वी कैच. So blood test is the right way to do it. We hardly ever get, at least I have not seen in the past 15 years, 20 years, a case of thyroid swelling. नहीं आते हैं. We get young couples, young girls who come to us, young boys to come to us. So they, in there, we can only diagnose by doing a blood test. So that's what I think Varghese wanted to know. Right. Yeah. Yes, blood test, or we can say that blood profile, proper blood profiling is important to know the parameters of thyroid. And obviously, as Talwar just mentioned about vitamin D3, you can take the tablets. And if you are willing to go ahead with the testing, you can definitely Yes. do, but with concern of your doctor. Doctor, two types of thyroid we usually talk about. One is hyper, another is hypo. So, what exactly is the more dangerous or concerned
for with us? Both are dangerous for us. जब व्हेन वी से हाइपर, इट मीन्स के Hmm. बॉडी में जो थायराइड का जो हार्मोन है, दैट इज बीइंग मेड इन हाई एक्सेस, उसकी Okay. उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड व्हेन टॉक अबाउट हाइपो, तो थायराइड का हार्मोन कम बनाता है. तो दोनों ही बीमारियां हमारे लिए डिफिकल्ट है मैनेज करनी. और आई मीन टू से दे आर द बस हु लीड टू द प्रॉब्लम्स. बट इन Right. इनफर्टिलिटी, hyperthyroidism doesn't actually present at a very young age. हाइपर मीन्स जब थायराइड ओवर एक्टिविटी कर रहा है, हाइपो मीन्स वो जब कम एक्टिविटी कर रहा है. सो इन आर यंग पॉपुलेशन ऑफ मेन एंड वुमेन, दो दे बोथ कैन अफेक्ट फर्टिलिटी badly, but in a young population our aim is to detect subclinical hypothyroidism. ये थायराइड कम Okay. काम कर रहा होता है. बट दो बोथ विल लीड टू नियरली द सेम प्रॉब्लम्स. बट फर्क होता है ना, जैसे किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है, कहते हैं वो दैट लेडी विल बिकम वेरी एक्टिव, तो वो हमेशा कुछ करेंगी, शी विल बिकम फिजिटी, और द मेन विल बिकम वेरी फिजिटी. हाइपर एक्टिव हो जाता है ना थायराइड. Right. हाइपर एक्टिव. हाइपो मीन्स चुपचाप से बैठे रहते हैं, शांत से बैठे रहते हैं. हाइपो मीन्स बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो गई, तो जो खाना Hmm. खाते हैं, जो खाना खाते हैं खाने में बॉडी में लगता ही नहीं है, so they tend to become obese, they gain weight. So like a PCO patient, PCOD patients, they can come with hypothyroidism. So फिर obesity भी होती है, BMI बढ़ जाता है. So in a younger population, hypo is a bigger problem than hyper. Hyper is not commonly seen. So hypo and subclinical hypothyroidism is the one which is more important for us. Right. Sir, we usually talk about, like, I know that I think the maximum number of viewers who are present right now in the session, they must know or they have read somewhere or through Googling and all that. They talk about कि मेरा विटामिन D3 लेवल कम है, that means मेरा egg quality बहुत खराब है. So is it really so? Yes, not only the egg quality, even the sperm quality. कुछ समय Okay. पहले मैंने आपसे बात करी, छोटा सा गिव यू स्मॉल स्टेटमेंट, दैट द Hmm. होल ऑफ बॉडीज, हमारी बॉडी में जो जो इंजन ऑयल है ना, एक कार है, अगर हमारा बदन एक कार के जैसा है, तो हमारी बॉडी में जो इंजन ऑयल है वो विटामिन डी है. तो जहां पर भी एक मेटाबॉलिज्म होना है, जहां पर एक एक्टिविटी होनी है हर सेल के अंदर, एक दो दो सेल आपस में बात करते हैं, तो विटामिन डी के थ्रू बात करते हैं. एटीपी, कैल्शियम चैनल्स, दिस ऑल ड्यू टू Hmm. दीज हार्मोन्स. सो अगर किसी भी स्त्री का या किसी आदमी का विटामिन डी लेवल्स कम हो जाते हैं, उसकी बॉडी में एक्टिविटी कम हो जाती है. सो मेन में मैंने बताया, मेन के अंदर स्पर्म पैरामीटर्स दे गो वेरी बैड. In the woman also, the egg quality can go bad in case the woman has got hypothyroidism. The egg quality can go back. How does it go bad now? हर एग के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है. और अगर आप देखें किसी भी जो मेच्योर एग होते हैं ना, दैट मेच्योर एग इज गॉट स्कैटर्ड क्रोमोसोम्स. जैसे आप एक फुटबॉल ले लीजिए, थिंक इट्स एन एग ऑफ द वुमन. इसके बीच में यू विल फाइंड देयर आर 23 क्रोमोसोम्स लाइंग स्कैटर्ड. सो जब शुक्राणु आता है तो तब दोनों मिलते हैं आपस में और दे मेक ए बेबी. सो ये जो बॉडी में हमारे स्पिंडल होते हैं, जो क्रोमोसोम्स को होल्ड करते हैं, समथिंग लाइक फॉर द ऑडियंस प्रेजेंट हियर, यू कैन से दैट ऑल द क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, जीन्स आर बीइंग हेल्ड बाय ए थ्रेड. जैसे पतंग उड़ती है तो धागे होते हैं ना, वैसे ही Hmm. ऑल द क्रोमोसोम्स आर बीइंग हेल्ड बाय द थ्रेड्स. इनकेस विटामिन डी लेवल्स have become low, these are affected. So the egg quality is being affected, sperm quality is being affected, egg shape may be affected, and along with this, you'll find that it's very common in the women who have got PCOD, the women who have got fibroids, and multiple conditions can occur in the body where the levels of the vitamin D can go bad, and it can affect the all the metabolic processes. So egg is definitely affected. It can affect the quality of eggs and also the shape of the eggs. Right. So next time, if you are visiting fertility specialist, please do visit as a couple and try to do these tests also as a couple. Investigation is really important because both of you need to contribute to healthy baby. Uh, And then so uh, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया. आई थिंक सवाल आपका लीडिंग नहीं था, तो आई फॉरगॉट. विटामिन डी कैन आल्सो अफेक्ट इम्प्लांटेशन. देखिए, एक बेबी oh, को बनाना
बेबी को बनाना, या हम बेबी को बनाए, या फिर एक कपल अपने आप से ही बेबी को जनरेट करे बाय द नॉर्मल इंटरकोर्स, वी हैव टू नो दैट एक बेबी को जब हमें कैमरे जनरेट करते हैं तो वो जनरेट होता है ट्यूब्स के अंदर, फैलोपियन ट्यूब नली के अंदर जनरेट होता है. दिस इज द वे द बॉडी वर्क्स. बट देन इट टेक्स अराउंड 5 days फॉर दैट बेबी टू रोल डाउन टू द यूट्रस. सो जब भी वो छोटा सा एक नन्हा सा एक बेबी एम्ब्रियो जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करता है, अगर ये यूट्रस की कैविटी है और यहाँ बेबी को इम्प्लांट करना है, जो एंडोमेट्रियम होता है दैट कैन बी अफेक्टेड इन केस देयर इज लैक और हाइपर एक्टिविटी ऑफ विटामिन डी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट Okay. दैट इम्प्लांटेशन ही नहीं होता है. बच्चे तो बने, Yeah. हमने बहुत अच्छे से Hmm. आईवीएफ करा, कपल ने जो जैसा बोला उन्होंने टाइम इंटरकोर्स करा, हमने अच्छे से Hmm. आईयू ही करा. बट लाइनिंग के अंदर अगर विटामिन डी लाइनिंग दिख रही है, बहुत अच्छी लाइनिंग है. अब एक कार देख लीजिए, कार दिख रही है, कार इज ब्यूटीफुल जगुआर कार इन फ्रंट ऑफ यू. पर अगर कार में इंजन ऑयल नहीं है, पेट्रोल है पर इंजन ऑयल नहीं है, तो क्या होगा? कार थोड़े समय के बाद तंग करना रुक शुरू जाए. कर. So and Right. even endometrium can be affected. So आपने जो मेरे को बोला, egg quality is affected, definitely yes. Along with that, the main concerns are in immunomodulation of the endometrium. जो कि लाइनिंग Okay. है यूट्रस की, वो भी इफेक्ट होती है. उसमें जीन्स होती हैं, कुछ जीन्स आर बीइंग अप रेगुलेटेड, कुछ जीन्स बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, तो इट कैन लीड टू दी डिसफंक्शनल रेगुलेशन ऑफ द जीन्स ऑफ द एंडोमेट्रियम. सो विटामिन डी को तो आप मान लीजिए कि हम सबको, पेशेंट्स को नहीं, आपको, मेरे को, जो हम अगर इंडियंस हैं तो हमको आई थिंक हर महीने में एक गोली खा लेनी चाहिए, या फिर हर रोज अराउंड 2000 यूनिट्स का एक गोली खाना चाहिए विटामिन डी Right. So, का. Yes. uh, मैं तो शुरू कर दूंगी. आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी इस चीज को ध्यान रखेंगे. So, doctor, last is about AMH. AMH हम सबको पता है because it's like a common thing when we start discussing about fertility things and all that. But I don't know whether it is a fact or ये हमने अपने अंदर डर बैठा लिया कि अगर मेरा AMH level 1 से कम है तो I really need a donor cycle. So is it really so? नेवर. देखिए सिंपल, अगर आप मेरे को अब 2-3 मिनट देंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएच होता क्या है. मैं जागरूक हूँ कि थोड़ा समय का कमी हो सकता है आपको. आप सिंपल मैसेज इज दैट एमएच हमारी बॉडी का एक एटीएम मशीन, जैसे हम कार्ड डालते हैं हमें बैलेंस पता चलता है, उसी तरह से एमएच बताता है कि हमारे जो डिम हैं, जो अंडे बनते हैं शरीर में, द एग्स, हाउ मच इज द रिजर्व ऑफ द एग्स. तो किसी भी जब बच्ची का जन्म होता है, जब वो माँ की कोख में होती है, उसके अंदर 6 से 7 मिलियन एग होते हैं. जन्म के समय एक छोटी बच्ची के अंडकोश में, ओवरीज में, she'll have around 1 to 2 million eggs. At puberty, when she has her periods, she'll have around 2.5 lakh eggs. And by the time she touches 35, she'll have around 35,000 eggs. And by the time she touches 40 years of age, she'll have 8,000 eggs. तो अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 12% के रेट से उसके शरीर में डिम यानी कि एक्स का लॉस होता है 37 साल के बाद में. नाउ जो ये एक्स होते हैं, दे ब्रिंग आउट ए हार्मोन कॉल्ड एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन. ये टेस्ट हम पीरियड से किसी भी समय कर सकते हैं. वी कैन डू इट एनी टाइम ऑफ द पीरियड्स, बट दिस इज अ टेस्ट विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस. सो एएमएच का जो वैल्यूज है, अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर देखें, 1.2 नैनोग्राम से कम जब एएमएच कम होता है, देन वी स्टार्ट वरिंग. परंतु Oh, this is related with the age, Purnima ji. It depends upon the age. Now a girl of 35, she has got an hmm. AMH of 1.2, and a girl of 40 has got an AMH of 1.2. दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. जैसे Right. क्लासिफिकेशन, तो 35 के ऊपर 1.2 अगर किसी का AMH आ रहा है, या 1 का AMH आ रहा है, 0.8 का आ रहा है, there is nothing to worry. Give them more care. But अगर एज हो गई है 40, 41, 42 और Hmm. AMH is 0.7, 0.8, there's a time to worry. But for anyone in today's world, there's nothing to worry at all. हर चीज का ट्रीटमेंट का तरीका है, and you should not worry for any AMH values. We have seen so many people with AMH of 0.1, 0.2, they are having their own child. Telling someone कि तुम्हें डोनर करना है, that is, I think, a very wrong answer. It's not the correct answer. Yes, in case somebody has got ovarian failure,
इसकी ओवरीज काम नहीं Right. कर रही हैं. Yes, otherwise any couple, किसी भी दंपति को, just a message from Birla Fertility and IVF too, that any couple should always try to go in for their own action. That's the motto of Birla Fertility and IVF: all heart, all science. So nothing to worry about AMH values. Yes, we have to be careful and try to do something more to your treatment. There are four categories of treatment. So when the AMH comes 1.2, less than 1.2, and your age is more than 35, that takes you into a high risk category. So there are ways to manage them. उनको आइडेंटिफाई करना इज इम्पोर्टेंट. बट आई थिंक फॉर ऑल द ऑडियंस प्रेजेंट हियर, बिल्कुल वरी मत करें. नथिंग टू वरी. देयर आर वेज टू मूव फॉरवर्ड टू. जब तक आपकी बॉडी के अंदर आपकी एज आपके साथ में है और एमएच वैल्यूज आर 0.2 0.3, यू कैन डेफिनेटली गो इन फॉर योर ओन child, and it all depends upon an ultrasound also, which we call, in which we carry out test called antral follicular count. So हम Right. क्या चीजें देखते हैं? एएमएच अकेला काम नहीं करता है. एएफसी, एएमएच और एज, तीनों, it's a triangle. We look at all the triangle, then we give a diagnosis. So working alone on a particular thing is not the right answer. इसके लिए criteria होता है Posidian criteria. Just to give information out, we have to always look at the Posidian criteria and then decide what type of management has to be given. Thank you so much, Pooja. Right. So next time when you think about AMH, then I think that a triangle is really important: AMH, age, and AFC. So think about three A's together, not only AMH. And I think, Dr. Talwar, it is really important that हम खुद सवाल अपने से बनाते हैं, जवाब भी अपने आप ढूंढते हैं, बट अगर हम डॉक्टर के पास विजिट करें, उनसे पूछें और उनसे समझें, तो शायद वो जो डर है एक अंदर से कि क्या मैं अपने एग से या अपना जेनेटिक उससे माँ बन पाऊंगी, वो शायद दूर हो जाए. एंड आई थिंक this is the whole criteria why we are having live sessions with such known doctors. So viewers, please do take care while discussing your AMH with अदर कम्युनिटी फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में. बेटर है आप डिस्कस करें डॉक्टर से. एंड इफ यू रियली वांट टू हैव कंसल्टेशन विद डॉक्टर तलवार और एनी ऑफ द fertility specialist from Birla Fertility and IVF, then please do visit them. आप विजिट कीजिए, फर्टिलिटी दोस्त का नाम लीजिए और डॉक्टर से मिलिए, या जस्ट सेंड अस अ मैसेज एंड वील अरेंज योर अपॉइंटमेंट और योर विजिट विद द डॉक्टर. एंड जैसे कि सर ने बताया, बिरला फर्टिलिटी के बहुत सारे सेंटर्स आर कमिंग इन ईच एंड एवरी सिटी ऑफ इंडिया. आई थिंक विद इन 3 or 4 months आ जाएंगे सेंटर्स, राइट? We plan to have Purnima ji. We like to, I'll take this opportunity on such a big platform of yours and all the audience around. We have got nearly 10 working centers all over the country now. We'll have around 25 centers by March 2023. 10 centers are being readied in the next 4 to 5 months, and we'll have around 115 centers approximately in next 3 years. So it's the largest growing chain of IVF clinics in the country presently, maybe the whole world. Great. Thank you. So viewers, don't hesitate to visit the centers. And सबसे अच्छी बात ये है कि they are pocket friendly centers. आपको बेवजह कोई टेस्ट नहीं बोला जाएगा करने के लिए. आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि हाँ आपने इतना अमाउंट जमा करवाना है तभी ट्रीटमेंट शुरू होगा. आप अपनी मर्जी से जाइए, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, बट प्लीज एक बार विजिट जरूर कीजिए, बिकॉज डायग्नोज इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव फर्टिलिटी इश्यूज. डोंट वेस्ट टाइम, डिले मत कीजिए. दिस इज द ओनली एडवाइस सजेशन वी कैन गिव यू एट दिस सेशन. एंड डॉक्टर तलवार, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर सेशन. और हर बार एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, बहुत मजा आता है. व्यूअर्स के साथ साथ मेरी खुद की नॉलेज बहुत बढ़ती है. एंड सीरियसली इट्स रियली नाइस सेशन, बिकॉज कुछ चीजें हमें पता थी, बट कुछ चीजें जो आपने हमें बताई, दिस एड्स टू एक्स्ट्रा नॉलेज. और आई थिंक इस सेशन के बाद लोगों को थोड़ा घबराहट और डर दूर हो जाएगा. सो थैंक यू वंस अगेन सर फॉर Thank you. ज्वाइनिंग. Thank you so much. थैंक यू.